Hello students, welcome to Power Tutorials. So today we are going to have a live session on lens topic. At the same time we are also going to cover the refraction formulas, the concepts related to refraction, Snell's law of refraction. At the same time few PYQ questions which have been came in the board exam on 2025, that is last year question paper. Okay, so now if you are watching this video for the first time, I have already covered mirror concepts at the same time few PYQs as well. So those I have covered in my last live session video which I have completed on Tuesday. So if you are interested for mirror questions, you can check the video which is present in the live section of my YouTube channel. At the same time I'll also try to keep that video in the comment section. Okay, so just give me 2 minutes. We'll start with the topic of today, which is refraction as well as lens topic. So first I'll give you a glance what we're going to cover today. So today we are going to cover today's agenda is we are going to cover what is refraction, what are laws of refraction, two spherical lenses which are concave and convex lens in detail as per the questions we'll cover, but as a glance what are convex and what is concave lens we'll cover first, and then we'll cover three topics which are lens formula, magnification formula and the power of lens formula. So power of lens is very easy, which is nothing but 1 by focal length. Okay, and then we're going to cover the PYQ questions. So total today I found around 10 to 11 questions which have been present in the previous, this year 2025 question paper, that is 30/1/1, 30/2/1 and 30/3/1. 3 set question papers I have taken, and we are going to cover the lens questions related to those formulas. Okay, so now let's start with the concept first and then we'll go with the questions. So what is refraction? So reflection, we know reflection is but if it is a plane mirror, if any light comes to a mirror, it will get reflected and the angle of incidence is equal to the angle of refraction with respect to the normal. Same way, what is refraction? So refraction comes for two medium. For example, have you ever, I think everyone should have tried this example in your home. If not, just try it today. So what was the experiment is, just take a beaker or glass. So just consider this as a glass. Okay, to this glass make sure to fill water till at least 3/4. Make sure this is made up of glass material. Okay, not steel glass, take a glass material. I'm sure definitely there should be at least plastic glass or glass material glass in sorry Aether, I am Sar here by the way, and I can only explain in English. At the same time in between I will try to convert in Hindi as well. Urdu I don't know, I'm sorry for it. Okay, but I can teach you in English, and if required and for you to few topics I will try to convert into Hindi as well. Okay, so let's continue. So in the glass material I told you. Now what is the experiment we have to do in home is, just take a pencil or pen is also fine, but make sure it is closed properly because the ink should not come inside it, or else any other material, metal if possible also, it's okay. Okay, just what you have to do is just keep that pencil or pen or any material inside this glass jar, glass material. Okay, so what will happen if you keep that metal inside till some part, it will be straight. Okay, instead of straight, let's keep it in cross type like this. ठीक है सर, मैं इस टॉपिक को हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ. तो टॉपिक है कि एक ग्लास मटेरियल वाला ग्लास ले लीजिए और इसमें 3/4 तक वाटर फिल कर लीजिए. ओके, उसके बाद क्या करना है कि जो भी मेटल जैसे पेन, पेंसिल और जो भी स्टिक भी काफ़ी है, वो स्टिक लेके उस ग्लास जार या ग्लास में डिप कीजिए. तो क्या होगा कि अगर तो आप बाहर से देख लिया तो पेन अगर ऐसे बाहर तो ऐसे पेन होगा, पर अंदर क्या मिलेगा कि ये वाला थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे दिखेगा आपको. पर पेन तो सीधा ही होगा, पर वो
अंदर जाने के बाद क्या होगा कि आपको ये थोड़ा साइड दिखेगा। तो क्यों ये ऐसे साइड दिख रहा है कि वही कॉन्सेप्ट है कि रिफ्रैक्शन, जब भी एक मटेरियल या लाइट एक मीडियम से, इधर मीडियम क्या है, मीडियम मतलब इधर कौन सा एरिया, इधर एयर है, और दूसरा मीडियम क्या है, इधर वाटर होता है। सो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है तो वो मतलब एंगल चेंज हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में इंग्लिश में बताऊंगा। whenever any light ray passes from one medium to another medium, the angle gets changed. ओके मैं हिंदी में भी फिर से बता रहा हूँ। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो एंगल इसलिए चेंज हो जाता है कि क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो इधर का वेलोसिटी दूसरा होता है और इधर का वेलोसिटी दूसरा होता है, इस कारण से वो एंगल चेंज हो जाता है। इस लाइव वीडियो का टॉपिक पूरा रिफ्रैक्शन के रिलेटेड है और कुछ PYQs करना जा रहा हूँ, वो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के रिलेटेड होते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन. I am going to explain a small topic about refraction. At the same time, I am going to cover the few PYQs which have been present in 2025 board exam paper. Okay. मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी इधर उधर चेंज करने की, क्योंकि जो भी नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल करे या कुछ लोग को इंग्लिश में दिक्कत होते हैं वो इंग्लिश हिंदी का भी सुना सकते हैं. मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना 100% ठीक नहीं है, फिर भी मैं 80% तक ट्राई करता हूँ. ठीक है. तो इंग्लिश में डेफिनेशन व्हाट इज रिफ्रैक्शन अगर पूछ ले, व्हाट यू हैव टू राइट इज द चेंज इन velocity of light when it is traveling from one medium to other medium. So here in this question we can see we had two mediums, air medium and water medium. So the light ray, if it is traveling from air medium to water medium, what is happening? The ray is getting refracted. Reflected in sense the angle is getting changed. Okay. What are laws of refraction? So total we have two laws of refractions. The first one, incident ray, refracted ray, is not reflected, make sure it is refracted ray, and normal, all lie in same plane. All should lie in same plane. Same plane मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो इधर का प्लेन है कि ग्लास मटेरियल वाला प्लेन. सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल मतलब अगर समझो कि ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ये वाला नॉर्मल होता है. तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री शुड लाई ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस to sine of refracted ray is always constant with respect to the medium. तो इधर का इस एग्जाम्पल का मीडियम है कि एयर एंड वाटर है. तो इस एयर एंड वाटर का मीडियम जो भी है, तो इस तरफ का इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे होगा, उन साइन का रेशियो सेम होता है. मतलब साइन ऑफ थीटा आई बाई साइन ऑफ थीटा आर विच इज़ रिफ्रैक्टेड इज ऑलवेज कांस्टेंट. एंड दिस कांस्टेंट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वो मीडियम का तरफ से कांस्टेंट. मतलब इस एग्जांपल में एयर एंड वाटर का मीडियम, तो एयर एंड वाटर का मीडियम में जब भी इंसिडेंट रे होगा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, उन दोनों का साइन रेशियोस कांस्टेंट होता है. तो और इस पॉइंट को भी स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस में
दे कैन आस्क यू डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट. ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं. टू स्पेरिकल लेंसेज के बारे में अभी पढ़ना है. तो स्पेरिकल लेंसेज का मतलब है कि तो स्पीयर का मतलब सब कुछ जानते हो, जैसे बॉल जैसा. ओके, द बॉल का एग्जांपल स्पीयर है. तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपने काट लिया और उस थोड़ा सा पोर्शन, अगर ग्लास का स्पीयर है तो थोड़ा सा पोर्शन आपने काट लिया, तो वो अगर ठीक है, कॉनकेव लेंस मतलब ऐसे होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं. मतलब एक स्पीयर का छोटा सा पोर्शन. ओके, सो कॉनकेव लेंस अगर आप हाफ अगर समझो तो इस तरफ से स्पीयर होंगे और इस तरफ से स्पीयर होंगे, तो दोनों का बीच में क्रिएटेड वाला लेंस जो भी है वो कॉनकेव लेंस बोलते हैं, और इधर कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव मिरर्स भी होते हैं. कॉनकेव मिरर्स मतलब ऐसे होंगे तो कॉनकेव मिरर, और ऐसे होंगे तो कॉन्वेक्स मिरर. मतलब शाइनी सरफेस अंदर से कर्व होंगे वो कॉनकेव मिरर होते हैं. बल्जी सरफेस अगर शाइनी सरफेस होते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. वो मिरर्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू मिरर्स. सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू lenses and PYQ questions as well. Okay, so we had two types of lenses, two spherical lenses, which are concave lens and convex lens. Concave lens will like shown like this, which has curvy surfaces left and right, whereas in convex lens it will be bulgy left and right. Okay, so if I consider this as a concave mirror, then this will be focal length, this will be twice of focal length, and this will be focal length of right side, this is twice of focal length of right side. Same way for convex lens also I can say this is focus length and these are focal length. So for convex this will be focus, and for concave this will be focus. Okay, so this way for concave focal length is considered negative, whereas for convex lens the focal length is always considered positive. This is very important, and this is same with respect to mirrors as well. Concave mirror focal length negative, convex mirror focal length positive. Okay, hope till here it is fine, because from now we were going to study the formulas related to it, and then we are going to start the PYQs as well. Okay. So what are the three formulas we have for lenses? First one is lens formula. So for mirror we have 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f, whereas for lens the formula will change to 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, v is the image distance from optical center, u is object distance from optical center, this is always negative, f focal length, and this is negative for concave and positive for convex. Okay, then we have magnification formula, which is m. So magnification formula is h dash by h or v by u. We have two formulas for magnification, which are h dash by h and h by u. H dash is height of image, h is height of object. And repeating again, h dash is height of image and h is height of object. What is power of lens? Power of lens formula is very easy. It is 1 by f, that is inverse of focal length, and it is denoted as meter inverse. And this is nothing but SI unit is diopter. So this we use for our main example is spectacles. Like who are suffering from myopia, that is short sightedness, they have to use
concave lens and the focal length power will be negative, and whoever for elder people they use convex lens, so that because those people cannot see the ones which are closer to them, so for them you have to use positive power lens which are convex lens. Okay, now we are going to start with the PYQs. So total around 10 questions I have, so I'm going to explain all those 10 questions one by one. First one, an object is placed at the distance of 60, so always remember the object distance is always negative because the object is always placed to the left of the mirror. Concave lens, so what is important for concave lens, the focal length is negative, so focal length they have mentioned also, which is minus 30. So simply they are asking to find the position of the image formed, so simply V value they are asking. Okay, so let's use our lens formula, which is 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V we don't know, that we need to find. 1 by U we have minus of minus 1 by 60, focal length is also negative, which is minus 1 by 30. So 1 by V plus 1 by 60 is equal to minus 1 by 30. So 1 by V is equal to minus 1 by 30 minus 1 by 60. Let's take LCM. So this becomes minus, okay, minus 60 minus 30 by 1800. If I take in that way, it becomes minus 90 by 1800. So 0 0 9 1s 9 20s. So 1 by V is equal to minus 1 by 20, or V value is plus 20 centimeters. Therefore image is created behind the lens. They are asking only position, so the answer is this position, which is image is created behind the lens. Why it is behind the lens? Because we got the answer as positive. Positive is always right to the lens. Okay, let's see the second question. The power of a lens X is minus 2.5D. Power is minus 2.5. So power is nothing but 1 by focal length. So F will become 1 by 2.5 minus 1 by 2.5, which is 4. Sorry, not 4. 0.4 minus 0.4 meter, because diopter is always measured in meters. So minus 0.4, so if I multiply into 100, this becomes minus 40 centimeters. Okay, I got the focal length. Name the lens and determine its focal length. So power is negative, so the lens is concave lens, because for concave only the power will be negative. So what is focal length? Focal length we already found. Focal length nothing but 1 by P. 1 by P we just found 1 by 2.5, which is 0.4, but we want in terms of centimeters, so it is 40 centimeters. For which eye defect of vision, the optical prescribed this type of lens as a corrective lens. So for concave lens is prescribed for, this is prescribed for myopia. Myopia is nothing but short sightedness or near sightedness. डिवाइड कैसे करते हैं? हाय ऋषि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. तो आप किसके रिलेटेड पूछ रहे हो? आप डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब फोकल लेंथ के बारे में? या हाय ऋषि, सॉरी आई जस्ट चेक द चार्ट. तो आप किसके लिए पूछ रहे हो? आप फोकल लेंथ के बारे में पूछ रहे हो?
ठीक है, मैं इस टॉपिक का फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे पावर -2.5d दिए है, तो फोकल लेंथ मतलब पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 1/पावर हो गया। सो यस, सो फोकल लेंथ इज 1/पावर, सो 1/2.5। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि f इज इक्वल टू -1/2.5। तो मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, सर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि -100/250 होता है। ओके, ठीक है, 25/4 होता है, तो इसलिए वो 25.4 हो जाता है। ओके, सो 25/4 तो इसलिए 25 इंटू 0.4 अगर मैं कर लिया तो वो 10 हो जाता है। तो इधर 10/25 मिला है, तो 25 1 25.4 10। काश आपको समझ में आ गया अभी? तो 0.4 मीटर है, पर हमको मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट के लिए इंटू 100 कर दिया हूँ, तो इसलिए 0.4 इंटू 100 40 हो गया। ओके ऋषि, थैंक यू। For which side effect? As a, for eye defect it is myopia, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। यूर वेलकम ऋषि, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। ठीक है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। ओके, मैग्निफिकेशन -2 दिया है, ठीक है, यूजिंग कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कंसिडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ इस वाला क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन -2 दिया है, ठीक है हमको, और ऑब्जेक्ट का प्लेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट u वाला डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर्स दिया है। वही मैं -20 दिया हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एज पर आवर साइन कन्वेंशन होता है। सो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, कोई भी मेरा कौन सा लेंस को बताए थे? ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंस के बारे में नहीं बताया, ठीक है। वेट वेट, ये यही क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है क्या? ओके, ये दूसरा है, पावर ऑफ लेंस 6। Just a minute, I think it's from the same question. Let me just cross check. Okay, same question but different topics. Okay, fine. So इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m for a lens they have provided -2 using the Cartesian convention considering that object is placed at -20 from the optical center of the state. Find the nature of the image formed. Okay, so ये मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन मतलब लेंस के लिए v/u होता है। सो -2 इज इक्वल टू v/u। तो इसके वजह से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं। v वैल्यू इज इक्वल टू -2u, u वैल्यू -20 है, तो v का वैल्यू क्या होगा? -2 इंटू -20 विच इज़ 40। तो फर्स्ट आंसर, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, नेचर इज वी गॉट v वैल्यू एज 40। सो वो राइट साइड ऑफ मिरर होता है। सो जब भी राइट साइड ऑफ मिरर होता है v/u, सॉरी ऋषि, वो मुझे समझ नहीं आया, v/u मतलब क्या होता है? ओके, v/u, ओके सही करें, मैग्निफिकेशन का फार्मूला v/u होता है, सही।
तो हाँ, हमको v वैल्यू मिल गया वो 40। v वैल्यू 40 मतलब इमेज राइट साइड हुआ। राइट साइड हुआ मतलब नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज रियल होता है। और इन्वर्टेड या एरेक्ट है। मैग्निफिकेशन फार्मूला नेगेटिव आया मतलब जो h डैश का फार्मूला है वो नीचे है, इसलिए वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ है। तो इसका वैल्यू रियल एंड इन्वर्टेड। यू कैन ऑल्सो राइट हियर नेगेटिव m, एज नेगेटिव m होता है वो इन्वर्टेड होता है। और रियल इसलिए कि वो राइट साइड ऑफ द लेंस होता है। जब भी राइट साइड ऑफ द लेंस से ऑलवेज वो रियल होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस मतलब वर्चुअल होता है। ठीक है। सेकंड, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये बहुत ही आसान है सेकंड वन, क्योंकि वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया है। तो इधर मैग्निफिकेशन -2 दिया है, तो वो फार्मूला होता है h डैश बाय h, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड ऋषि। तो h डैश -2h होता है, मतलब ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट के बारे में पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस द। ओके। सेकंड, थर्ड वन, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन हमने ऑलरेडी कर चुका हूँ। पोजीशन क्या होता है 40। सो तीसरा आंसर, ओके वेट सॉरी, सो तीसरा आंसर position, we got the v value which is 40. Position is 40 centimeters to the right of lens. So how we got v value? I just explained you here. यूजिंग मैग्निफिकेशन हमने कर दिया, फोकल लेंथ का भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैग्निफिकेशन दिया है। तो -2 इज इक्वल टू v बाई u, v इज इक्वल टू -2u, v इज इक्वल टू -2 इंटू u वैल्यू -20, विच इज 40. सो पोजिशन इज 40 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, साइज ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। सो हमको h डैश पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हमको मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u। ओके। h का वैल्यू नहीं पता ना था। size of object, okay, size of height of image। अगर कुछ height of object दिया है क्या, using sign convention consider the object is placed at distance 20 from the optical center of state। साइन, ओके, इस साइज नहीं पूछ रहे, साइन पूछ रहे। साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज वो नेगेटिव होता है। साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव। वाई? बिकॉज m वैल्यू -2 दिया है, h डैश बाय h। तो h डैश का वैल्यू क्या होता है -2 इंटू h, सो नेगेटिव होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं। से 5 मार्क्स क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। न्यूमेरिकल वैल्यू से फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज दिया है ए एंड बी। ए का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स है और बी का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स है।
और क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, विच ऑफ द टू विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, गिव रीजंस टू जस्टिफाई। तो वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मतलब पावर होता है, और पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f विच इज़ 1/4 फोकल लेंथ। तो जब भी फोकल लेंथ कम होगा पावर ज़्यादा होगा। ओके, सो सिंपल, पावर विल बी हाई व्हेन f इज लो, मतलब फोकल लेंथ इज लो। सो इन दोनों केसेस में कौन सा लो है, ए का फोकल लेंथ वैल्यू लेस है, तो इसलिए एज ये इज हैविंग लेस फोकल लेंथ, its power of convergence or divergence is high. Simply power or degree of convergence का A is greater than degree of convergence than B। अगर रीजन पूछ लिया तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/, पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, तो इसलिए A का पावर ज़्यादा होता है कंपेयर टू B। Okay, Rishi, I think you understood right this question. So let's go with the next question. So इस क्वेश्चन में हम क्या क्या पूछ रहे देख लेते हैं। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिक्यूली फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास। ओके, तो इसके लिए हमको वो एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहे, सिर्फ रे डायग्राम पूछ रहे हैं, पर वो रेक्टेंगुलर ग्लास है। तो पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं। स्केल पेंसिल से अच्छे से करवा लीजिए। इधर मैं ट्राई किया पर वो सीधा स्ट्रेट नहीं हुआ, पर आपको अच्छे से ग्लास स्लैब मतलब रेक्टेंगल शेप लेना पड़ेगा पहले। उसके ये एयर होता है और ये ग्लास होता है और नीचे वाला फिर से एयर होता है। तो पहले वो इंक्लाइंड लाइन पूछा है, तो इसलिए ये इंक्लाइंड वाला पहले लाइन ले लेते हैं और यहाँ नॉर्मल लिखना पड़ेगा, वो परपेंडिकुलर होता है ग्लास स्लैब का। नॉर्मल, तो यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है कि ये जो भी लाइन है ये सीधा नहीं हो जाएगा पर नीचे आ जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ओके, और यहाँ से फिर से सेम जैसे एयर्स टू मतलब ये वाला लाइन है ना, सेम उसी तरफ का लाइन पीछे आता है। और अगर आप ऐसे वाला लाइन प्रोजेक्ट कर लिया पैरेलली, तो वो लाइन और ये लाइन पैरेलल होते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 to 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। तो आपको कुछ चीज़ याद रखना है। ये पहला वाला चीज़ ये आई है और ये ई है। एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। और ये वाला एंगल R1 है और ये वाला एंगल R2 बोलते हैं।
ये पहला वाला रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, और दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। और यहाँ भी हमको नॉर्मल लिखना पड़ेगा, और ये वाला एंगल I2 होता है, सेकंड इंसिडेंट। ये डायग्राम बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंट्स भी नोट्स कर लेता हूँ। ई वो इंसिडेंट रे, मैं अगर ओ डैश लिख लेता हूँ तो वो ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे, ओ डैश एच, वो नीचे वाला लाइन है ना, इनको एमर्जेंट रे, ओके। अगर आप देख लिए तो आई और ये सेम होता है, क्योंकि एयर टू ग्लास जो भी होता है, और फिर से अगेन बाहर वाला लाइन एंगल भी सेम होता है, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होता है, मतलब ई ओ और ओ डैश एच आर पैरेलल, ई ओ एंड ओ डैश एच आर पैरेलल। So I'm explaining this topic in English first. So what is happening is, whenever there is an incident ray 2 and it is passing through from one medium to another medium, तो इस वाला मीडियम क्या होता है, वो ग्लास का मीडियम है, ओके। तो ये बाहर का वाला एयर। सो whenever there is light ray falling from air to glass, what will happen is, due to the refractive index, it will move little inside. And once again it is coming from glass to air, so from denser medium to rarer medium, thinner medium, so what will happen, again the speed will increase, so the light ray will again push backward. So what will happen, this ray, that is incident ray, will be exactly equal to the angle of incidence, or else, okay, not this angle, this is not E, this angle R2 angle will be same exactly when compared to I1 angle, not R2, but whereas R1 is a refracted ray. तो अभी मैं इंग्लिश हिंदी में बताऊंगा। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम का लाइट ट्रैवल करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो इधर का वेलोसिटी हाई है, फॉर ग्लास में वेलोसिटी लो है, तो इसलिए वो अंदर बेंड हो जाते हैं। तो जब भी डेंसर से हायर रेयर मीडियम मूव कर रहे हैं तो फिर से वेलोसिटी बढ़ जाता है, तो इसलिए वो अगेन फिर से टिल्ट हो जाता है। तो ए वाला लाइन और पीछे वाला लाइन दोनों पैरेलल होता है, क्योंकि दोनों एयर में वेलोसिटीज ऑफ लाइट सेम होता है, okay। Let's move to the next question. States Snell's law of refraction, मैं इनका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, पर वो सिंपल है कि साइन ऑफ थीटा ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ थीटा ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट for particular material and medium. Because I already explained this topic before starting with the PYQs in this video. So there I have explained that what is Snell's law, the sine ratio of the sine of theta I to the sine of theta r, which is angle of incidence and angle of refraction, is always constant for a particular medium, okay। तो हम तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में चले जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेजेस फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, ओके। सो फर्स्ट वन, see the
वर्चुअल इमेजेस के बारे में पूछा है। ओके फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड O मतलब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, और मैग्निफिकेशन एनलार्ज होता है। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है कि एक ही पोजीशन में मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है और मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। तो अगर वो आप रे डायग्राम अगर पूछ लिया तो हम आपको कॉन्वेक्स लेंस F1 F2 F1 F2 लेना है, और बिटवीन F1 एंड F2 मतलब इधर ऑब्जेक्ट मतलब हाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये पैरेलल होता है तो इस वाला फोकस से वो डाइवर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट इस सेंटर से अगर लाइन ले लिया तो सीधा चला जाता है, और ये दोनों अगर वापस ले लिए तो वो पीछे यहाँ इमेज फॉर्म होगा, पर वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है। ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में है। सेम वे हम कॉनकेव लेंस के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वो भी डाल देते हैं। कॉनकेव लेंस फॉर कॉनकेव लेंस पोजीशन जहाँ भी हो हमेशा वर्चुअल इमेज ही आएगा। ओके मैग्निफिकेशन स्मॉलर आते हैं मतलब डिमिनिश्ड। सो वर्चुअल इमेज का कॉनकेव मिरर्स कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा डिमिनिश्ड आता है और स्मॉलर साइज आता है। तो उनका रे डायग्राम भी मैं आपको दे देता हूँ। कॉनकेव लेंस का दो ही रे डायग्राम होता है। तो फर्स्ट वन अगर कॉनकेव लेंस में ले लिया तो जब भी पैरेलल लेंस आते हैं इसके लिए तो क्या होता है कि वो डाइवर्ज होता है। कॉनकेव लेंस के लिए डाइवर्ज, कॉन्वेक्स के लिए कन्वर्ज होता है। तो ये वाला दो रेस अगर मैं वापस ले लिया तो एग्जैक्टली वो फोकस में कांटेक्ट होगा, तो इस यहाँ पॉइंट साइज होते हैं। ठीक है, सेम वे अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लिया जब भी थोड़ा सा क्लोजर टू द फोकस यहाँ में ले लिया तो क्या होगा कि एक पॉइंट में वो डाइवर्ज होगा और दूसरा में सेंटर से अगर पास कर लिया तो ये दोनों अगर वापस ले लिया हूँ तो इधर इमेज फॉर्म होगा। तो इधर का इमेज वर्चुअल है और स्मॉल है। तो कॉनकेव लेंस में वर्चुअल और स्मॉल हमेशा वर्चुअल होता है। इधर तो पॉइंट साइज है और यहाँ तो स्मॉल होगा। पर कॉन्वेक्स लेंस में आपको एक ही पोजीशन में मिलेगा, वो भी फोकस मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उसी टाइम पे वो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा, पर वो साइज कम होता है।
Hi target board Rexy, thanks for joining. So in this video we're going to have doubt. Okay, yes Arya, please explain your doubt. So as of now we have covered I think around 6 questions on lenses topic. Okay, let's continue. One of the two lenses, one concave and other convex, state which one will diverge a parallel beam of light falling on a ray diagram. So divergence we have to use convex lens. Convex will converge, concave will diverge. Concave lens yes Arya, please explain the question. I'll definitely try to solve it. If it's related to lenses in this video, but if it is related to other topic, you can mention. You could also post the question in our channel community section, but just you have to subscribe to the channel, then you can post it because the option is there only for subscribers. You can also post the question directly in the community section using an image option. There I will definitely check, and if required, I'll prepare a separate video. If it is a small question, I'll try to explain in this video itself. Okay, so concave lens, the video is any light ray if it is falling on concave mirror, so concave lens, it will diverge. So they're asking them ray diagram as well. So let's draw the ray diagram for concave lens. If a parallel ray is coming like this, so what will happen? The light ray will get diverged. Okay, this is done. Let's move to the next one. A ray of light rays after refraction on concave lens emerge parallel to the principal axis. Okay, draw a ray diagram. Again the same type of question, but here it is not concave lens, it is convex lens. Okay, so let's draw the convex lens. Draw principal axis, and here they are saying emerge parallel after refraction, it is parallel. So for this what we have to do is we have to pass through a point called focus. If a light ray is falling from focus, then the light ray will get parallel to the principal axis. Okay, and this is nothing but principal focus. In this case, the incident ray before refraction falling the passes the point on reflection in the point. The point is nothing but focus. Okay. What is aperture पूछ रहे हो आप? So aperture मतलब वो diameter of the concave lens which controls the amount of light entering to it. Okay, अगर आप देख लिया तो A वाला diameter. Importance for heredity. हेरिडिटी और लेंस के अपर्चर में रिलेशन नहीं है यार यहाँ. अगर आप चाहे तो एग्जैक्टली वो कौन सा टॉपिक है वो एग्जैक्टली पेश कर लीजिए. मैं इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करूँगा. अगर इम्पोर्टेंट है तो बाद में एक्सप्लेन करूँगा. पर अभी ये टॉपिक लेंस के बारे में है. आप यू हैव एनी क्वेश्चन विथ रिलेटेड टू लेंस टॉपिक, यू कैन पॉइंट द क्वेश्चन हियर. Let's move.
So 31st question, this is one of the set we have if a 3 marks question. Okay, a convex lens. Okay, we have convex lens. So simply first thing, whenever you're seeing convex or concave or any lens questions, first understand whether it belongs to which one, concave or convex, because based on that we have to decide the sign of the focal length. Okay, so lens forms a 8 centimeters long image. So we have h dash value which is 8 centimeters. Convex lens forms 8 centimeters long image of a 2 centimeters long object. So h is 2 centimeters, which is kept at the distance. Okay, u also we have, which is minus 6 centimeters if the object and the image are on the same side of the lens. Okay, so simply they are saying v value is also negative. Why? Because object and image are on the same side, means on the left side, because object is always on the left side. And what is the lens here? Major formula मैं already explain कर चुका हूँ आर्या. So I already explained the topics, formulas for lens. Yes, for lens I already explained, which are for lens topic you have only 3 formulas. Yeah, hi Sania Jehra, thanks for joining. So in this video we're going to explain lens related topics and refraction topics. So in this video I have explained the formulas related to lenses, which are 3 formulas for lens. We have lens formula which is 1 by v. Yes, I am explaining it. It is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, which is the lens formula. Then we have magnification, m is equal to h dash by h, which is v by u, height of image by height of object, and then we have power of lens, where p is equal to 1 by f. Only these 3 formulas are there for lens topic. And for mirror topic, that you already covered in my previous live session, that is already there in my live section of my YouTube channel. You can check and there you can see it. Why there are less people? That I cannot answer, Arya, because this channel is a growing stage, so maybe few people are free, only those people are joining now. So but if you like this video, please do like and do subscribe, so that definitely some of your friends might see it and they can also watch the live video in the next time. Okay, and if you like this, and whoever has joining, if you like this video, please do like, subscribe and share with your friends who are also studying or preparing for the 10th board exam. Okay, so let's continue. So in this question we have h dash is 8, h is 2, u is minus 6, and it is on the same side, so v is also negative. Fine, till here is okay. Convex lens, so focus is positive. Done. Find the nature of the image. First question is nature of image. So as it is left side, so I can simply see the nature is virtual and direct. Okay, it can be below also, right? Left side is always up only. It should be virtual and direct. Okay. What about second one? Position of the image. So this we have to find the v value. It is lens, so first lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Let's substitute the values. 1 by v minus u value is minus 6, f value is positive, but f we have here. Okay, f value don't have, but h dash and h values we have. Okay, so for this we'll use the magnification formula to get the value instead of focal length. I'll remove this, because we have what is magnification formula for lens. The m value is h dash by h, or the second formula is v by u. So using these two you can get the v value. How? H dash is present 8, h is 2, and v value is how much? V is negative, that we need to find, and u value which is which is minus 6. So 2 1s 2 4s, so v value is minus 24 centimeters. Why it is negative? Because it is already clearly mentioned it should be left side of the mirror, because both object and image are found on the same side. So v is minus 24. Hence the second question, position of the image is minus 24. Position is 24 centimeters to left of mirror. Sorry, left of lens here, not mirror.
Okay, third one, focal length they're asking. Fine, for this we have to use the lens formula. Minus, sorry, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. V value is how much? We got as minus 24, u is minus 6. Okay, 1 minus 1 by 24 minus 1 by minus 6 is equal to 1 by f. 1 by 24 plus 1 by 6, we have 1 by f. So minus 1 by 24 plus 4 by 24. So simply I will get 1 by f is equal to 3 by 24, which is 8. Therefore focal length is equal to 8 centimeters, and I got the right answer. Why? Because for convex lens the focus is always positive. For suppose if you got negative, then definitely your calculation somewhere is wrong and you have to correct it. Okay, so let's conclude with the last question for today, because it's around 1 hour now. So last question for today. So absolute refractive index of water and glass, they have provided 4 by 3 and 3 by 2 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10 power 8, the speed of light in water they are asking. Okay, so for absolute refractive index, eta is equal to c by v. That is, refractive index is equal to c by velocity of something. So what is the velocity of refractive index of, okay, light there for glass they have mentioned. For glass is 3 by 2. So 3 by 2 is equal to c by v is how much? 2 into 10 power 8. So 2 ones, 2 2s. So simply c value we have got, which is 3 into 10 power 8. So this is almost, this is always 3 into 10 power 8. But if it's just one more question, so no need to do this part. But if this same question, if it has asked for 3 or 4 marks, and c also you have to prove it, it is 3 into 10 power 8. Okay, the next one, eta, that is refractive index of water will write, which is 4 by 3 is equal to c by velocity of light in glass, sorry, in water. So v is equal to c into 3 by 4. C we got, which is 3 into 10 power 8 into 3 by 4. So the final answer is 9 by 4 into 10 to the power of 8 meters per second, which is here. It's not meter per second, it should be 9 into 10 power 8, 4 into 10 power 8 as well. They have missed in the question, so it's a mistake, but still as per number we can figure out which value it should be. Okay, the answer is 9 by 4 into 10 to the power of 8 meters per second. So I think most of the questions type we have covered and the concepts are also covered. Okay, one more question, but in detail I'm going to just give a description how to solve it. The refraction of light at rectangular slab, okay, this we already covered, why it is parallel, and the ray diagram and the phases, that all we have covered. So this I'm not going to cover. In the next part I will just do, because this is just a numerical. Let's solve that numerical second part. So object is placed at the distance, okay, concave lens they have mentioned. Concave means the focus is negative. Object placed at the distance, okay, u value is minus 30. Focal length is negative, so it is minus 20. Simply we need to get the v value. So I will do it, this question. One by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v we need to find. U value is how much? Minus 30, f is minus 20. So 1 by v is equal to minus of minus, this becomes plus. So if this moves the right side, it becomes again negative. So minus 1 by 30 minus 1 by 20. So 1 by v is equal to minus 50 by 600. So 12 5 is 60. So v value is minus 12 centimeters. So the position is 12 centimeters left side of mirror, or here left side of lens, because the distance is less than the focal length. So if you remember, for concave lens, the distance is less than focus. Here if it is placed, then what will happen, it will get diverged and it will be here, and these two will be formed here, left side.
Okay, let me just cross check everything is fine. Object places a distance of minus 30. It is between these two, so object is plus u. Okay, correct. For concave mirror, it will be always on the left side only, irrespective of the position. Okay, so this is the object and this is the image created. This line and these two lines will get here. So this is the image creation, which is at 12 centimeters to the left side of the mirror. Sorry, left side of the lens. Okay, so in this way all the questions related to lens are solved. So thank you everyone for joining till the end. So if you have any doubts, not only with respect to lens, you can drop your questions in community. This is enabled only for subscribers. If you have doubts, please subscribe to my channel first, and then you can paste your questions in the community section. And in posts, you can find various MCQs. So please try and give an attempt, because daily solving at least 3 to 5 MCQs which are posted in my posts of the YouTube channel, you will definitely gain confidence. So next video, mostly tomorrow around 12 p.m. we will get a video on maths. So science we have covered so many things, so we will cover again, go to maths and maths PYQs, and we will study about AP, which is arithmetic series. Thanks for joining. Let's meet again tomorrow around 12 p.m. where we will cover the topics related to arithmetic progression. Thank you. Or else tomorrow 8 p.m. 12 p.m. or 8 p.m. we'll have a live session.